Hello friend, how are you? Welcome to Tirpan Study Center. We are going to do today is very important MCQ question here. The MCQ question for class 6 science chapter here air around us and with the answer. And this is important and which will be very important for the exam point of view and it will be important for the competitive exam also. Let's see what is our topic today. Today we discussion most important chapter here, air around us. Class 6th CBSE NCERT science here. That's important. And today we discussion most important MCQ here. The MCQ is most important for the exam point of view. And let's see question here. Next question on your screen. Question here. What is not true about the air? You know that for a statement given here, the examiner asks a question, what is not true about the air? यानी देखा जाए तो वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है। चार ऑप्शन में से हवा के लिए कौन सी बातें जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी बातें जो है सही नहीं है। द ऑप्शन है इट हेल्प इन द मोमेंट ऑफ एरोप्लेन, B. Birds can fly due to the presence of air. C. It make the windmill rotate. And D. It has no role in the water cycle. You know that question is very interesting. But one fact is important. Air play the biggest role in the water cycle as the water vapor and rise to form of cloud. Air play a biggest role in the water cycle as a water vapor, the rise to form a cloud. It means to the answer here. It has no role in the water cycle. It's a wrong option. It is a wrong option. An examiner also is called to the wrong option, not a true. It means to the D option is correct here. The A help in the movement of aeroplane. That is a correct answer. B is the birds can fly due to the present of air. That's the true. And it make to the windmill is a rotate is also true. But last statement is given it has no role in the water cycle. But air play the biggest role. Air play the biggest role in the water cycle as the water vapor rise to be form a cloud. It means D statement is wrong here. D statement is not true. That means the D option is correct for this question. Next question on your screen. Question here. Why do the mountaineer need to carry oxygen cylinder with them or because? Question is very clear. Why do the mountaineer need to carry oxygen cylinder with them? Because mean here पर्वत आरोही को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन समझ में आपको आया? जो पर्वत आरोही होते हैं, जो माउंटेन पे जाते हैं, देखा ही होगा कि बहुत से व्यक्ति जो है माउंट एवरेस्ट की फतह कर रखे हैं, लेकिन वो साधारण रूप से नहीं जाते हैं। वो जब जाते हैं माउंटेन पे तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। लेजेंडरी पॉल भी जो गई थी दो बार, वो भी जो है सिलेंडर लेके गई थी और उनके साथ घटना घटा था कि उनको जो है अपनी सिलेंडर को जो है शेयर करना पड़ा था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमारा यही है कि जो पर्वत आरोही होते जो पर्वत पर जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? तो ऑप्शन है देयर इज नो ऑक्सीजन इन द हाई माउंटेन, बी देयर इज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द माउंटेन एट अ हाई एल्टीट्यूड, and C oxygen keep them warm at a low temperature, and D oxygen is used to be for a cooking. You know that question is very interesting, but one fact you understand that's important. The mountaineer carry oxygen cylinder with them because there is a deficiency of oxygen in the mountain at the high altitude. As we go higher in altitude, their atmosphere get thinner
and the oxygen supply decrease. Therefore, will the climbing mountain it's make a breathing difficult. Hence, mountain can oxygen cylinder with them. There is a very difficulty breathing for the mountains here. Mountain that is important. It means to the answers here. The answers here that's important. There is a lot of deficiency of oxygen in the mountain or at the high altitude. Option is B is correct. There is a lot of deficiency of oxygen in the mountain at the high altitude. That's important answer here. And let's see next question. The next question on your screen. Question here. A moving air is called. Moving एयर इज कॉल्ड. क्वेश्चन साफ है कि चलती हुई वायु को हम क्या कहते हैं. हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं. साधारण लैंग्वेज में अगर देखा जाए जो हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं. तो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. मूविंग एयर इज कॉल्ड ए डस्ट, बी ए स्मोक, सी विंड, डी नाइट्रोजन. यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द आंसर हियर C wind. The moving air is called wind. Option C is correct. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. Properties of oxygen gas is. Properties of oxygen gas is. ऑक्सीजन गैस के क्या गुण होते हैं. ऑक्सीजन गैस का क्या गुण होते हैं ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन जो गैस होती है उसके क्या गुण होते हैं. जो हमारे ऑप्शन है इनमें से कौन सा गुण जो है ऑक्सीजन में पाए जाते हैं. तो ऑप्शन है ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, ऑक्सीजन इज अ टेस्टलेस, ऑक्सीजन इज अ ऑर्डरलेस या डी ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, यू नो दैट ऑक्सीजन गैस इज अ कलरलेस. दैट्स अ ट्रू हियर. Oxygen gas is a tasteless. It means to B is also true here. And oxygen gas is odorless. It means to the A, B, C is correct. The answer here D. All of these. The question property of oxygen gas is colorless, tasteless, odorless. It means to all of these. D option is correct for this question. D. All of these. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Smoke is produced mainly by burning. Smoke is produced mainly by burning. यानी देखा जाए तो धुआं जो होता है धुआं मुख्यतः जलने से उत्पन्न होती है. धुआं जो है किसके जलने से उत्पन्न होती है. क्वेश्चन हमारा समझ में आया कि इन ऑप्शन में से किसके जलने से धुआं उत्पन्न होती है. द ऑप्शन है वुड, बी कोल, सी केरोसिन एंड डी ऑफ दिस. क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्मोक इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बर्निंग ऑफ wood, coal, kerosene. You know that a wooden is here burning. There is a lot of smoke is produced, and the coal is burned. Lot of the smoke is produced here, and kerosene also. It means to wood, coal, kerosene produce a lot of smoke. It means to the option D is correct. All of these. Smoke is produced mainly by burning of wood, coal, kerosene. It means to D option is correct. All of these. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. One of the component of air used to manufacture a fertilizer on the large scale is dash. You know that question is very interesting. One of the component of air used to manufacture a fertilizer on the large scale is mean कि हवा जो है इनमें से एक ऐसी चीज़ को बनाती है जो एक तरह का फर्टिलाइज़र कहलाता है. फर्टिलाइज़र का मतलब होता है दोस्तों जो हम खेतों में डालते हैं
और खेतों में डालने से जो है उपज बढ़ती है। इन चारों ऑप्शन में से हम किस चीज़ को डालते हैं जो एयर का मैन्युफैक्चर होता है, यानी एयर से बना हुआ होता है, और उसके कारण जो है अच्छी कृषि होती है। क्वेश्चन बहुत समझ वाली है कि इन चारों ऑप्शन में से हम किसका उपयोग जो है खेतों में जो है कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं, और ये जो है हवा का ही पार्ट है। द ऑप्शन ए कंबूशन, बी नाइट्रोजन, सी स्मोक, डी डस्ट। नो दैट इज क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। One of the component of air used to manufacture of fertilizer on a large scale is, you know that B is a combustion, that is not a fertilizer here. Nitrogen, nitrogen is type, there is a fertilizer. You know that nitrogen is most important for agriculture. There is a nitrogen. One of the component of air used to manufacture fertilizer on the large scale is a nitrogen. Nitrogen, it means to B option is correct here. Nitrogen, B option is correct. And let's see next question here. अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एयर इज प्रेजेंट इन, एयर इज प्रेजेंट इन, वायु कहाँ पर विद्यमान है, हवा जो है कहाँ पर हमें प्राप्त होती है, हवा से हम कहाँ पर मिल सकती हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भी समझ लीजिए। एयर इज प्रेजेंट, हवा कहाँ पर उपस्थित होता है। ऑप्शन ए एटमॉस्फेयर, बी सोयल, सी वाटर, डी एवरीवेयर। यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट many students take options A is a atmosphere is the right answer, but no, air is present in everywhere, air present in everywhere, atmosphere, soil, water, everywhere. It means the D option is correct. The air is present is everywhere. D option is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen, question here, which of the following gas is used for the breathing? क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इन चार ऑप्शन में से आप किसका उपयोग जो है सांस लेने में करते हो। द ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज फॉर अ ब्रीथिंग। You know that answer is clear, oxygen. Oxygen is a take the breathing. It means the C option is correct, oxygen. And let's see next question here. The next question on your screen, question here, Anya took a lamp of dry soil in a glass beaker and added water to it until the soil was completely immersed and she absorbed bubble coming out of the soil. The bubble is contained here. You know that the question is very interesting. Anya took a lamp of dry soil in a glass beaker and added to the water to it until the soil and was completely immersed. She absorbed bubble coming out of the soil. The bubble is contained. Mean अन्या ने एक कांच के बीकर में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया और उसमें तब तक पानी का डाला जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से डूब न गया। उस मिट्टी में बुलबुले निकलते हुए दिखाई देने लगते हैं। आखिर बुलबुले क्यों निकलते दिखाई देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो कि आप एक गिलास लो, ठीक है, कौन सा गिलास, शीशे का गिलास, और उसमें मिट्टी के एक ढेला जो होता है, मिट्टी का जो होता है टुकड़ा, वो उसमें डाल दो और देखो कि उसमें से क्या होता है। कुछ आपको निकलता हुआ नज़र आता है तो आप देखोगे कि उसमें से बुलबुले निकलते हुए नज़र आएंगे। तो आखिर ये बुलबुले जो होते हैं किस कारण निकलती हैं। तो ऑप्शन सी है, और वो बुलबुला जो होता है किस तरह का होता है, उस बुलबुले में कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन ए ओनली ऑक्सीजन गैस,
B. Water vapor. C. Air. D. None of these. Question is very interesting. Annie took a lamp, a dry soil in the glass beaker and added to the water to it until their soil was completely immersed. She observed bubble coming out of the soil and the bubbles contain air. The answer is clear here. The soil is contained of air. It means the bubble is here coming. That's most important. In fact here, when the water is poured into a dry soil, the soil absorbs the water and the air pocket present in the soil escape the form of bubble. That's important here. And that's the most important for exam point of view. This topic was till this. We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as a much as a possible. Do not think subscribe and save in your mobile. Thank you.